So, hey guys, what's up and welcome back to the channel. This is Braapster and welcome back to another video. So, I know I've been far from YouTube for a very long time. Since 2018 I haven't been uploading videos, but here I am back with another video and with a completely new setup for my videos. And I know all of you are excited. आपने टाइटल पढ़ ही लिया है और टाइटल ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है, to know how you can get a camera for yourself from YouTube. And I'm going to tell you the whole story. I'm going to tell you the whole process, how you can do it. I'm going to simplify it for you. So stick to the end of the video. Let's not waste much time, right? Let's kick in the intro. Wait. Hold up. So, आपको क्या लगा? वापस वही same intro and वही same. Like guys, setup change हुआ है. Intro भी नया लगेगा. So let's play the new intro. So hey guys, what's up? And this is the new frame that I was talking about. So this is the Hero 9 that I was talking about. So आपको पहले ही फ्रेम से समझ गया रहेगा कि क्या चेंजेस है इस पूरी वीडियो में. वैसे हम अभी यहाँ पे बाइक पार्क करके पहुँचे हैं बंटी पे. एंड बंटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे यूजुअली हम हैंग आउट करते हैं एवरी वीकेंड्स. तो यहाँ से मैंने सोचा कि अपनी वीडियो को शुरुआत करता हूँ. इट्स happening day for me because अभी ये GoPro आया है and I'm uploading my first vlog. By the way, मुझे लगा था कि winter is coming but बारिश पीछा छोड़ नहीं रही है. सब यहाँ पे भीगा हुआ है and सर्वेश है वहाँ पे. So let's see उसका क्या बोलना है नए कैमरा के बारे में. And here he is. वीकेंड का खाली बंदे. Hello. तो सर्वेश आपका क्या बोलना है इस नए कैमरा के बारे में? तो ऑनेस्टली लाइक अच्छा हाँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन है. सो ऑफ कोर्स ऑलवेज व्हेनेवर देयर इज एन अपग्रेड यू टेंड टू गेट हैबिचुएटेड टू सर्टेन मेनी मोर थिंग्स. सही स्क्रीन का सिचुएशन है. इफ आई लुक इन द स्क्रीन, जो फर्स्ट टाइम इसका कैमरा में मैंने ब्लॉग करते वक्त आई एक्सपीरियंस दैट पार्ट. आई होप अभिषेक इज़ नॉट डूइंग दैट मिस्टेक राइट नाउ. इफ़ इज़ डूइंग, आपने नोटिस कर ही लिया रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि आई शुड बी लुकिंग एट दी लेंस. कांडिया लग रहा है. कांडिया लग रहा तो नहीं है क्या, वो देख लो. सो सर्वेश, द मेन क्वेश्चन इज कि हीरो 9 जैसा एक कैमरा. सो लाइक इफ़ यू गो ऑन अ वेबसाइट यू विल सी इट फॉर like 40,000. So getting it from YouTube. So I'm going to reveal that secret, that how I got it from YouTube. But what are your suggestions? Can this happen? Like on a low platform like the subs that we have right now, is it possible? Like pretty big important thing that you do something for your own hobby and in the end if it pays you. So usually YouTube पे बहुत सारे लोग आते हैं कि भाई आपके ऐसा काम करना है, आपके ऐसा वीडियोस बनाना है, सब्सक्राइबर्स गेन करना है, फेम चाहिए. सीधा कोई नहीं बोलता कि सबको पैसे कमाना है. YouTube के पैसे, YouTube के पेमेंट्स को अगर सेव कर लिया तो आप ही सोचो 43 या 44,000 एवरी ऑल्टरनेट मंथ या फिर 3 मंथ में 8-8 हज़ार आते रहेंगे. तो आपको कितने महीने सेव करने हैं, कितने वीडियोस बनाने हैं, कितना कंटेंट इस तरीके से कंसिस्टेंसी से पोस्ट करना है. यू नो हाउ डज इट वर्क. सो बिफोर मूविंग टू द फैक्ट कि मैंने ये कैमरा कैसे लिया एंड व्हाट यू गाइज हैव टू डू, आई लाइक टू फोकस ऑन वन थिंग, दैट द टी-शर्ट दैट सर्वेश इज वेयरिंग राइट नाउ. सो दिस इज समथिंग. Please elaborate, Sarvesh. So this is basically a motorcyclist merch that we always wanted to have. And when we got into our own business, that is Wolf & Company, we got ample of time to understand कि हमको चाहिए क्या. Now these t-shirts, what we always wanted, that what we observed कि जैकेट उतारने के बाद हम धूप में राइड करते हुए, we always used to get the typical half sleeve tan वाला situation. और हमारे टी-शर्ट्स को किस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए, जैकेट उतारने के बाद how should a rider look like, motorcyclist look, how motorcyclist should look like. तो ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद we thought of coming up with a very subtle black and white merch which started with motorcyclist. We always wanted कि अगर कोई बाइक, अगर हम लोग डेली अप डाउन के लिए बाइक चला रहे तो one arm like towards the inner lanes of your road will always be visible and with your the best name that you can ever have is motorcyclist.
So we thought of doing it and we developed it. And now, yes, there are approx somewhere around 150-200 merch holders right now in the market. And if you are not amongst them, maybe you know what to do. You should click on the link below, जो कि Wheels of Raw Student के पेज पे लेके जाएगा, Wolf & Co के पेज पे लेके जाएगा, and it will you just have to DM them, and whoever is willing to join the club नीचे कमेंट्स में या मेरे DM में भेज देना. और Wheels of Lost Freedom जो कि यहाँ पे दिख रहा है उसके चैट बॉक्स पे एक बार DM कर देना, and we'll get back to you. So the most important part of this video, how I got this camera. Sarvesh, what do you think? How I got this camera? YouTube payment. That is what I personally feel. That is what everyone is waiting for. So I'm just gonna give a trick so how you can enhance your YouTube payments. So like this took me around after 3 years. I was eligible enough after buying all the stuff that I got from my riding background to get this camera. Like मेरा जैकेट हो गया, सेफ्टी किट हो गया, मेरा टॉप बॉक्स, सैडल सब हो गया. उसके बाद मैंने कैमरे के लिए आया हूँ. So the main trick to grow your YouTube counts and your YouTube money, fuckers, get working. Start posting. Consistency is the key. Discipline. Post videos every week. Get more subscribers. Think what people want to see, and then you're gonna get this camera. इसके बाद ना अभिषेक का लास्ट पोस्टेड डेट देखो, वीडियो का लास्ट पोस्टिंग डेट देखो. Yeah, I do see that if आप काम कर रहे हो अच्छे से, if you are posting videos regularly and अच्छे खासे एक subs gain कर रहे हो, एक अच्छे खासे viewers बना रहे हो, then you can surely get this one. I believe a better one from this. For sure, that is pretty possible. So that is the only key, consistency and discipline. That is what going to keep you at the A game. And ये एक छोटा सा कैमरा हो गया. You can get any fucking thing that you want from your YouTube. Just need to work upon it. So that is my key. ऐसा कोई खास ट्रिक नहीं देने वाला हूँ मैं इस वीडियो में जिससे आपको फट से पैसे मिल जाएंगे. पैसे कमाना. Important thing that don't be that kind of person कि आपको किसी बड़े इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया कि quit that job immediately and do whatever you love. तो मैं अगर पानी पूरी बेचना है को मेरे को पसंद है और मेरे को पता ही नहीं कि वो बूंदी बनाते कैसे है, तो पानी पूरी बेचने का मकसद नहीं है मेरा. अगर सिर्फ किसी को देखा करते वक्त और देखते वक्त अच्छा लगा, उसका मतलब ये नहीं कि आपको वही ही करना है. आई बिलीव एवरीवन ऑफ यू माइट बी वर्किंग समवन. आप अगर स्टूडेंट्स हो, नाइस, बट डू नॉट फॉल फॉर समथिंग लाइक दिस कि अगर एक बड़े इन्फ्लुएंसर ने बताया कि लुक एट माई लैम्बोर्गिनी एंड आई जस्ट क्विट माई जॉब वन डे. ऐसे कुछ नहीं होता. वो लोग भी अपना अपना काम करते रहते. एंड आफ्टर अ वाइल इफ़ यू थिंक दैट यू आर डूइंग रियली ग्रेट, 2 मिलियन 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड नाउ यू सी कि आपको जॉब एक्स्ट्रा करने का टाइम नहीं है, that is when you can think of YouTube as in your 100% career. This is what it is going to be for this video. And अगर आपको ये merch देखना है जो अभी सर्वेश ने पहन रखा है, so we'll get a nice cinematic view of it from the video. यहाँ पे आई बटन पे एक लिंक आ रहा है, what is Wolf. आप वो merch पहन के कैसे दिखोगे and how wonderful you can look with this motorcycle attire. A motorcyclist just needs this impression on his sleeve that defines his profession, that defines his love towards motorcycle. So just check out that video. That's it for this video, guys. I hope you love this camera angles and whatever the shooting part is. So बहुत ज़्यादा कुछ इस वीडियो में नहीं होने वाला. And stay tuned for more videos because इस कैमरा का पूरे यूज़ मैं अगली वीडियो से करूँगा अपने. Thank you so much for watching this video, guys. I hope you loved it and stay tuned to the channel because more videos are coming soon. Wolf is not going to stop riding, right? Never. Never. That was not an option either.